Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia Regulatory Body YouTube channel. And today we have Mr. Shubham Aggarwal, who recently got selected in the SEBI Grade A Examination 2022. And first of all, I congratulate Shubham for getting such a decent rank in this so competitive exam. Thank you, sir. Thank you Okay. all. Okay. So, Shubham, my first question to you is like introduce yourself about your background so that our viewers get an idea about your past experiences and academic qualification. Yes. Yes, sir. Sir, I'm Shubham Aggarwal and I'm from Delhi. I have completed my graduation and post-graduation both in economics, and I have been preparing for government exams since 2016. And I started my journey with civil services, and then I shifted to regulatory body exams. Uh, by the grace of God, I cleared the SEBI Grade A this time. This was my second attempt in this exam. Previously, I have also attempted RBI Grade B and also for Indian Economic Services. Okay, perfect. So, Shubham, आपने बताया you did your graduation in economics, right? और Yes. वो you completed that graduation in 2016, and since then you've been preparing for the government exam, opted for civil services as your first priority, right? तो सिविल सर्विसेज का क्या आपका हिस्ट्री रहा कि व्हाई यू शिफ्टेड व्हाई यू डिसाइडेड कि यार लेट्स गो फॉर द अदर एग्जाम्स नॉट ओनली फॉर द सिविल सर्विसेज व्हाई डिड यू टेक दिस डिसीजन Sir, in civil services, I was not getting that success I would have wanted. I cleared prelims, but I was not able to clear mains. The main reason for this was that I was not very good in general studies. I was good in economics. My option was good, but in general studies was not my cup of tea. I was good in the general aspect. I could understand the subject, but could not fetch marks in the civil services. This was mostly because it was not my deal. Yeah, I can't do general studies every day, but I can do economics every day. So I found my love in economics and shifted to exams which are more related to economics. okay then you shifted for the engineering services Sir, in an economic services. ओके सॉरी इकोनॉमिक सर्विसेज राइट Economic इंडियन services. इकोनॉमिक सर्विसेज ठीक है तो 4 साल के अंदर आपने बोला 2020 तक मैंने अटेम्प्ट किया सिविल सर्विसेज Yes. राइट तो 4 साल के अंदर आप आपने कैसे अपनी कंसिस्टेंसी रखी या व्हाट मेड यू रियलाइज कि लेट्स डिसाइड कि लेट्स गो फॉर इकोनॉमिक सर्विसेज और लेट्स गो फॉर दी सेबी आरबीआई ये सारे एग्जाम्स सर इनिशियल टाइम्स में जब हम एज वाइज थोड़े छोटे होते हैं, यंग पॉपुलेशन होती है, तब थोड़ा जोश ज्यादा होता है इंसान में। उस जोश जोश में ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं है, कुछ प्लान नहीं करते। एंड शुरू में मैंने यही सोचा था कि यूपीएससी तो क्लियर हो ही जाएगा, एंड देन जब वो क्लियर नहीं हुआ, देन आई फाउंड माई सेल्फ इन मिडल ऑफ नो वेयर। देन आई फाउंड कि यूपीएससी बहुत हो गया, अब आपको अपनी जो ऐसे एग्जाम्स की तरफ जाना होगा जो आपका दिल करे, आपका मन करे जिसमें पढ़ने के लिए। आपको सोसाइटी के प्रेशर पे या किसी जॉब में क्या क्या पर्क्स मिलेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, उस पर फोकस करने की जगह अपना खुद का फॉल देखना चाहिए। ओके राइट तो फिर आपने जब शिफ्ट किया इकोनॉमिक सर्विसेज की तरफ तो उस टाइम पे कौन कौन से चैलेंजेस जो आपने फेस किए इन अदर एग्जाम्स के अंदर जैसे चलो इकोनॉमिक सर्विसेज एक एग्जाम हो गया फिर आपने बोला आरबीआई भी एक और एग्जाम था सेबी भी था तो इसको कैसे आपने कोप अप किया कि यू डिसाइडेड कि लेट्स रीड ऑल दी सिलेबस और कोई स्पेसिफिक आपने कोई स्ट्रैटेजी डिराइव की सर सबसे बड़ा चैलेंज तो इसमें अडेप्टेबिलिटी थी। द यूपीएससी फॉर्मेट इज वे डिफरेंट फ्रॉम द अदर फॉर्मेट्स। करेक्ट द आरबीआई एंड सेबी हैज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस and you have to adapt from one format to other, and for this I just try to stick to my basics. In RBI and SEBI there is one disadvantage that are no previous year questions, so we just have no idea what kind of questions they will ask, and for that I have to take my basics as strong as possible because I do not have any advanced level questions, so I can only follow basic questions. And for preparation strategy, I follow that when RBI exam is coming, before 2 or 3 months, I start preparing for RBI.
and then when SEBI start, then I start preparing for 4 months for SEBI. I also gave banking exams, but was not able to clear anyone. But I just stayed focused on them rather than quitting it. I stay focused on them, and eventually I got a job in one of them. Correct. So, Shubham, my question is what was your strategy for clearing the phase one of SEBI? Sir, phase one, there is an absolute cutoff of 40%. For that, I really didn't read much because of phase one and phase two syllabus is almost equal. So my focus was also only on economics part. I have to do well in economics. My main focus was there. Okay, right. And any books, any notes, any revision strategy, any test series that you went for? Sir, for the theoretical part, the statics part, I use the standard reference books, which I were using for before economic optional and economic services. There was one challenge that I have to adapt because those books and notes are made for descriptive papers and not for objective ones. So I have to pick those things which are important for objective papers. And after that, I have to focus on in my English also because the descriptive English paper is also very important in these exams. Right. So can you name suggest any books for the self-study for the student who would love to do self-study, who would love to read at their home, right? Any books? Sir, for Indian economy, I have followed the video course by Abhipedia on economics. It was really helpful, and there were current affairs related questions which help a lot. They help me to link the current affairs from the static part and to give more quality to my descriptive answers also for RBI and help me to understand those objective questions which are most complicated in nature. And the main point is for Indian economy in books, there are not much thing which can be used for objective papers because in competitive exams, more current affairs are asked rather than the static part. Static part. Okay. Yes. Okay. And if we talk about the phase two strategy, थोड़ा सा उसको elaborate करके बताइए. What was your phase two strategy? Sir, because this was my second attempt, I knew one thing that this time there will be many numericals in the exam. So I tried my best to attempt as many numericals as I can, and I practiced a lot of numericals, and that too without using any calculator or using any calculating device, because I know there will be a calculator available, but using calculator will take my time. There is only 40 minutes in the exam, so we can't use a calculator for everything. So we have to have our calculations also at mark. Also, we have to do any numerical as fast as possible. For that, we have to know all the basics. We cannot derive any formula on the spot itself. We have to learn and remember every formula which is available in the book. Okay. So how much time you revise your syllabus? Sir, I didn't focus on the time limits and I didn't follow the clock. I revised as much as it was possible and I gave everything for it. Every part of my time was devoted to it. Okay. And what was your strategy for attempting the test, mock test? फॉर एग्जाम्पल कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टेस्ट के ऊपर ही ज्यादा रिलाई करते हैं. दे नेवर गिव सो मच इम्पोर्टेंस फॉर रिवीजन. दे गिव टेस्ट एंड दे रिवाइज थ्रू टेस्ट ओनली. कुछ होते हैं जो रिवीजन करके टेस्ट देते हैं. मतलब इट डिपेंड्स ऑन कि क्या काम कर रहा है. आपके केस में क्या चीज काम की? आप रिवाइज करके टेस्ट दे रहे हैं या टेस्ट पे ज्यादा डिपेंडेंट है? व्हाट वाज योर way of approaching this? Sir, my focus was all on revision. मेरा फोकस यही था कि सिलेबस में कोई भी पार्ट ऐसा नहीं रहना चाहिए जिससे कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए और मैं सरप्राइज हो जाऊं. ऐसा नहीं होना चाहिए.
जो भी एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को मुझे पहले ही प्रैक्टिस करके रखना है, सभी टॉपिक्स में जो भी अवेलेबल हो सकते हैं इस फील्ड के अंदर, उन सबको मैं प्रैक्टिस करना चाहता था। टेस्ट पे मैंने ज्यादा रिलाई नहीं किया क्योंकि मार्केट में क्वालिटी टेस्ट ज्यादा अवेलेबल भी नहीं है। ओके, राइट, ओके। शुभम, एक चीज और भी मुझे जाननी है कि आपका सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर हो गया ये एग्जाम। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर हो जाता है। यस केसेस हर तरीके के मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका थर्ड फोर्थ फिफ्थ में भी नहीं क्लियर होता है, राइट? एन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे के भी, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं इन द केस ऑफ यूपीएससी सीएससी ऑल्सो, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट में लोग क्लियर करते, कई स्टूडेंट्स नहीं क्लियर कर पाते। So, what would you suggest to all those students जो गलतियां कुछ कर रहे हैं, जो आपने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में गलतियां की होंगी, तो यस शायद you realized it and then you ensure it कि नहीं, अब नेक्स्ट में नहीं करनी है मेरे को वो गलतियां। yes it is really very important. After first attempt or second attempt, whenever you fail, you have to focus that why, on the reasons that why have you failed, and you have to analyze that. And sometimes it just appear that you have made your best efforts and you just didn't cleared it. This is also sometimes the case. भाई मेहनत पूरी करी, सब कुछ सही करा, फिर भी बस क्लियर नहीं हुआ। अगर ऐसा केस है तो हमें दोबारा अटेम्प्ट देने की कोशिश करनी चाहिए, दोबारा मेहनत करनी चाहिए। बट अगर केस इस तरीके का है कि हमें वो चीज समझ में ही नहीं आ रही है, वो जो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं वो समझ में ही नहीं आ रहे हैं, then it's not benefit to give the attempts again and again. It will just be a waste of time. It's better कि आप ऐसे एग्जाम्स की तरफ शिफ्ट करें जो आपके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट हो या आपकी Correct. स्ट्रेंथ पर हो। Okay, right. So let's talk about the last stage, that is the interview stage, right? So how you prepared it, and what was your ultimate impression about the when you gave your actual interview? तो फिर क्या लगा कि इस बार तो हो जाएगा सिलेक्शन? यस सर, जो अभी तक फाइनल रिजल्ट के मार्क्स तो नहीं आए हैं, बट हाँ, आई नो फॉर श्योर दैट द मेन डिफरेंस हैज क्रिएटेड बाय इंटरव्यू। ओके, दिस वाज बिकॉज बिफोर दैट आई हैवंट टेक एनी मॉक इंटरव्यू। मैंने कोई मॉक इंटरव्यू कभी नहीं दिया था, डायरेक्टली बस पैनल मेंबर के सामने जाके बैठ जाता था और वहां जाके पूरी तरह से नर्वस हो जाता था, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना कुछ समझ में नहीं आता था। बट दिस टाइम I gave mock test by through Abhipedia, and this time the interview member of the mock interview gave बंसल me सर। one very good advice. Bansal यस, sir, यस, he यस, gave me a very good advice. He gave me the advice that I should focus on my delivery of answers. He said to me that any interviewer asks you a simpler question than the written exams. In written exam, they ask you very difficult questions. But in interview, the interviewer panel member is asking you a simple question because he wants to also assess your delivery of answer. So focus on the delivery of answer rather than just reading the books or reading the theories and everything. He also said, pointed one thing that I only stick to my theory rather than comparing it with the current affairs. If any economic question is asked to me, I just give the theory of it rather than the real things which are going in the real economy. So these two tips were really helpful for me to clear this exam. Okay, Shubham, I must tell you that you are actually very luckiest person because you got that opportunity to get that Yes, interaction from the Bansal sir, who is actually the head of the complete Abhipedia as well as the Abhimanyu. So obviously, and the second point is that what I felt is कि आपका economics था background, and उनका भी background जो है economics है, he's great in his field. तो उसके अंदर जो है पॉसिबली आपको बहुत अच्छा हेल्प मिला है, दैट इज पॉसिबली बिकॉज दैट्स व्हाई यू गॉट रियली वेल इन द इंटरव्यू। हम लोग तो एंड अल्टीमेटली व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज सिलेक्शन, राइट? तो जब आपका एक्चुअल इंटरव्यू हुआ तो उसके अंदर कुछ ऐसा कोई किस्सा आप शेयर करना चाहते हैं जो बाकी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो, जो इंटरव्यू अपेयर करें नेक्स्ट टाइम के लिए? Yes, sir. By coincidence or by the grace of God, you can say that my first interview with SEBI and my second interview this time was also on the same date, and that was on 11th June. Okay. In the both years, in 2021 and 22.
Okay. And when I said this thing to the panel members start laughing, and they were saying it is an anniversary. And this one point made the whole interview very smoothing and very satisfying for everyone. Okay. Okay. Right. So was that the same panel last year, जैसे ही? So the panel was not same. Okay. Okay. This is why they were surprised that it is an anniversary for the interviews. Okay. Right. 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 So, any last suggestion that you would like to give to the aspiring SEBI as students who है ना? So any tips that you would like to give to them? सर मैं बस लास्ट में यही कहूंगा कि लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हम पूरी मेहनत करते हैं, सारे पूरे एफर्ट्स देते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आता. इस केसेस में हमें परसिस्ट रहना होगा. हमें कभी ना कभी लाइफ रिजल्ट जरूर देगी, बस हमें अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखना जरूरी है. And actually, well said. You are the perfect example of keep on working. You'll at the end of the day you'll get what you deserve. And आपके केस में तो Yes. it's completely justified what you just mentioned कि keep on working. And 6 साल की मेहनत आपकी जो है वो ultimately Yes. आपने सेबी के एग्जाम को which is highly prestigious exam, तो उसको क्वालिफाई करके आपने वो प्रूफ कर दिया. तो अभी सब कुछ चल रहा है ठीक, जितना प्रेशर था वो कन्वर्ट हो गया एकदम से. यस, अब कोई प्रेशर नहीं है, कोई हाँ. फीलिंग नहीं है. बट वन थिंग आई वुड लाइक टू स्टे हियर. बट भले ही मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, बट आई एम स्टिल रीडिंग, आई एम स्टिल यस. स्टडिंग, आई एम स्टिल रीडिंग. बिकॉज जो ये हैबिट मिली है मुझे इतने सालों में गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में, तो गवर्नमेंट आपसे यही चाहती है कि आप सिर्फ प्रिपरेशन ना करें, उसे अडेप्ट कर लें हमेशा के लिए. यस. तो मैं अभी भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, मैं अभी भी स्टडीज कर रहा हूँ, जैसे हमेशा करता था वैसे ही कर रहा हूँ. और मेरा मोटिव है कि मैं अपनी लाइफ टाइम यही करता रहूं, अपनी नॉलेज इंक्रीज करता रहूं. करेक्ट. सो बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशनल सेशन था, इंफॉर्मेटिव सेशन था. और शुभम, आई कॉन्ग्रेचुलेट वंस अगेन फ्रॉम द एंटायर फैमिली ऑफ अभिपीडिया. एंड कीप हसलिंग, कीप वर्किंग हार्ड. और भी आगे बहुत कुछ कर सकते हैं आप. और सिविल सर्विसेज से आपने जो मेहनत की है उसने यस, बहुत सारी चीजें आपको सिखा दी है, सो दैट कि लेट्स गो विद दिस वे ऑल्सो. उस चीज में भी जा सकते हैं. यू विल डेफिनेटली एंड अप with यस, wonderful gifts that you'll be having, right? So यस. Shubham, thank you, and for giving such good interaction, and wish you all the very best of luck. थैंक Thank you. यू. Thank you.